ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ 8 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, 3 ಕ್ಷೇತ್ರ BJP ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಬರೋದು. ಬಂದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ 5 ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, 5 ಯೋಜನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, 5 ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 10% ಏನೋ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ BJP ಸರ್ಕಾರನೂ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ESE ಆಗಲಿ ಅಥವಾ PF ಆಗಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರೈತರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಗುರುತು ಬಂದು ಪಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 8ಗೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. आवाम जनता से अपील है, गुजारिश है, कर्नाटक कार्मिक पक्षा को वोट देकर करके कामयाब बनाए। कार्मिक पक्षा ऐसे हिंदुस्तान के 2 ऐसे आँख और हाथ हैं कि जिससे हिंदुस्तान की मजबूती होती है। और यह हुकूमत ने ख़ास करके मज़दूर और किसानों को ही तकलीफ़ दिया है। यहाँ तक कि GST जितना है वो सब मज़दूर और किसानों पे ही रखा है। किसानों को जो है से इतना तंग कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने कि किसान के खाने के ऊपर, रोटियों के ऊपर आफत पड़ी हुई है। और मज़दूर कारखानों में तो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको सैलरी भी नहीं मिलता, उनकी तनख्वाहें भी उनको भरपूर नहीं मिल रहा है। अगर 2 रुपये का काम रहता है तो मज़दूर तो करके दे देता है, लेकिन उसको मिलता है वही 2 रुपये। और उसी को हुकूमत जो है, सरकार जो है, उसी को 500 रुपये में बेचती है। मज़दूर वहीं का वहीं रहा और नीचे घटता गया। और GST इतना हो गया है, मज़दूर के बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, इसलिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर है तो एजुकेशन के ऊपर है। बात ऐसी नहीं है। हमारे मुख्तार साहब हर वक्त जो है किसान और मज़दूरों के साथ में है, हर दुख और दर्द में उनके साथ में है। यहाँ तक कि कोविड में सबसे ज़्यादा जो है मज़दूरों को रेलवे के सहायता किया, उनको आने जाने का ये किया, उनको खरीदे के उनको घर तक के जो है उनको राशन पहुँचाया, पका हुआ अनाज भी उनको वहाँ तक के सेफ्टी कारखाने और रोडों पे जहाँ जहाँ वो थे उनको पहुँचाया। जो बाहर के मज़दूर थे, जो घर जाना चाहते थे, जैसे UP दिल्ली जाना चाहते थे, उनको वहाँ तक के टिकट भी करके दिया गया, उनको पास बना करके दिया गया। सबसे ज़्यादा यह किया। हर वक्त जो है हमारे खान साहब जो है मज़दूरों के हक़ के लिए जो है तैयार रहते हैं। और दूसरी पार्टी के लोग जो ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने AC में बैठ कर के ही हवा खा लेकर रहते हैं। और हमारे मुख्तार अली साहब जो है हर मज़दूर को, हर लेबर के जो है साथ में दुख और दर्द के साथ में रहते हैं और उनकी जो है भलाई। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನಾ ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ನಾಲ್ಗಿಂತ ನಾವು ಇದಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ವರೆಗಿನ ಮೊದಲು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಥ ಹುಡುಕಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ. ಇದು ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾರ್ ಖಾನ್ ಅಲಿರೋದು ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದವ್ರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇವ್ರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಇವ್ರ ಗುರುತು ಬಿಂದಿಗೆ, ಅದು ಮಟ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ முக்தார் खान சಹಾಯ ಮಾಡಿத்தாವು. எங்கள் சார் ஓட்டு போடுங்க. என்ன கஷ்டத்தில் இருக்க லாக்டவுனில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, எந்த ஒரு சாப்பாடு எதுவும் இல்லை. 2 டைம் சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. ஹெல்ப்புன்னு போய் கேட்டால் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. மறக்காமல் எங்கள் சாருக்கு ஓட்டு போடுங்க. அவர் ஓட்டு ஜெயிச்சாருன்னா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும், इडೀ बेंगलुरु के எல்லாருக்கும். मैं ये कर्नाटका कार्मिकर पक्ष के सबसे कर्नाटका स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो इस वक्त बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर जो हमारे मुख्तार खान साहब को कैंडिडेट उन्होंने अपनी तरफ से नहीं खड़ को ही, हमारी जो यूनिटी है जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से हमें फोर्स कर को इनको खड़ाने की वजह क्या कर को बोले तो आज एक छोटी सी बात बोलती हूँ। ये 6.5 करोड़ की आबादी जो कर्नाटका स्टेट के अंदर लास्ट टाइम जो बीजेपी की सरकार जब थी उसे शिकस्त देखो हमें बैकआउट किकआउट करने के वास्ते करके बोल को पूरे तरीके से हमें 2.5 करोड़ मुसलमान तकरीबन मिलकर कर्नाटका के तकरीबन 240 MLA को विधानसभा के अंदर भेजे है। तो आज हमने कांग्रेस हुकूमत हमारे साथ सख्त नाइंसाफ़ी कर दी है। पूरे कर्नाटका स्टेट के अंदर जो 20 पर 8 सीटें ले लगाने की वजह से सिर्फ मुसलमानों के हक़ में 1 सीट दे दी है। तो इस वजह से कि हमारा हक़ बनता है कि हमारा हक़ पूछने के वास्ते हमारी तरफ के जो हमारे घर वाला हमारा खुद का बड़ा भाई हमारे साथ खड़ा तो हमारा हक़ मिलता है कर को बोल को हमें ज़बरदस्ती के ये चीज़ के अंदर यहाँ माइनॉरिटी की सीट डाल को इन्हें ये दिखाना चाहती कि मुसलमानों को हम इतना दे सकते हैं कर को बोल को। हमने भीख नहीं होना, हमें भीख के मोहताज नहीं है, हमें हक़ परस्तियाँ हैं। ठीक है, तो जिस जगह में खड़को तुमने रोड के ऊपर अगर यहाँ बात कर रहा हूँ कर को बोले तो ये भी एक जो मजदूर की मेहनत है।